Ever wondered how much safer your work at height operations could be? Imagine a world where every potential hazard is detected before it becomes a problem. Meet Tracker AI's smart PTZ camera system. This isn't just any camera, it's a game changer in work at height safety. Safety is paramount, right? It's the foundation of a productive and happy workforce. Despite stringent regulations, accidents still happen. Traditional methods often fall short in preventing these incidents. Enter Tracker AI's smart PTZ. This advanced system is designed to fill the gaps left by outdated safety measures. Tracker smart PTZ cameras deliver unmatched oversight so you can spot hazards before they become accidents. Offering 24/7 monitoring, it detects work at height safety hazards instantly, no matter the time of day or night. Think about it. Real-time monitoring, automated alerts, and even fall detection. It's like having a safety manager who never blinks. Real-time alerts trigger immediate action, ensuring that potential dangers are addressed before they escalate. Automated surveillance significantly reduces human error, making your work site safer and more efficient. It even detects PPE and welding work compliance, ensuring that all workers are properly equipped. Ensure every worker goes home safe. That's the ultimate goal, isn't it? Ready to elevate safety? Stay safe, stay smart. With Tracker AI, you're not just upgrading your equipment, you're upgrading your entire safety culture. The Tracker Smart PTZ camera features advanced AI algorithms that are constantly learning and adapting to new safety challenges. With 360-degree rotation and high-definition video, it covers every angle, leaving no blind spots. You can decide which areas to cover, what to detect in each area through a simple online procedure without ever leaving your seat. Through the setup, you can monitor what is happening on the ground in real time remotely. In a recent case study, a manufacturing plant reduced accidents by 40% after implementing our system. Features include night vision, advanced monitoring for PPEs, work at height and welding activities, including real-time analytics, making it a comprehensive safety solution. Our team of experts ensures the highest quality and reliability, constantly innovating to meet your safety needs. Plus, our dedicated support team is here to assist you 24/7, ensuring that you get the most out of your investment. Join the revolution in safety with Tracker AI's smart PTZ camera system. It's time to take your safety measures to the next level. Visit tracker.live to learn more and get started today. Together, we can create a safer, smarter future for everyone. Hello, everyone, and welcome to another episode of Hacklab Podcast. Today, we are diving deep into the world of modern process safety, how robust systems, emerging technologies, and human centric approaches are shaping safer industrial environments. We are honored to have with us Mr. Sukanto Das, lead for process safety management at Johnson Mackey and a certified process safety professional. With his rich experience in implementing PSM frameworks, leveraging digital tools, and building safety cultures, this is going to be a truly insightful conversation. So let's get started. Thank you, sir, for joining us today. Thank you, Amber. And before we start our conversation, I would request you to please introduce yourself for our audience. Hi, everyone. Thank you, Amber, for inviting me, for sharing my experience and knowledge with respect to process safety and risk management. And hi, everyone. This is my first time on a podcast. So कुछ थोड़ा सा नर्वस भी हूँ. I can imagine कि फिल्म स्टार कैसे फील करते होंगे जब कैमरे को फेस करते हैं. So Right. अगर थोड़ा सा इधर उधर हो तो हंसिएगा मत. बट मैं नॉर्मल रहना, नेचुरल रहने की कोशिश करूंगा. So Right. myself Sukanto Das, I'm basically a chemical engineer and I have experience of 18 plus years in the field of process safety and risk management. In the various field, I started career with petrochemical, that is around Reliance Industries Limited, and shipping from there to fertilizer,
to specialty chemical to fragrance, and now I am working with Johnson Matthey, which is dealing in catalyst. So मेरा experience process safety में शुरू से रहा है, and I'm very passionate about process safety because ultimately process safety, save lives. So it gives meaning to my work. And adding to that, I am a CCPS process safety certified professional, which is very few in the world. So that is in adding advantage to my career. Thank you very much, Amber. Thank you, sir. So let's get started. Can you briefly explain what process safety management means in today's industrial context? Correct. So it's still process safety with respect to Indian culture is Indian industrial prospect is very very in very starting phase. Very few industry among all industry are implementing process safety because the main reason behind that in India is still process safety is not compulsive by legislation. As you know, in US and UK and European countries where process safety and risk management is mandatory by law, whereas in India it's still it is not mandatory by law. It's good to have, not must to have. So for the start, I will urge to all the industrial कि आप जो है compliance से बाहर आए and excellence की तरफ जाए. So because process safety and risk management is an approach which is divided into two parts. One is management, one is engineering. So process safety is a combined of both. It's a technical safety as well as management system. So one way is you need to implement process safety, and another way you have to be technically expert to know which is good and which will make your plant safe. Because process safety, in a nutshell, is a system which will safeguard life, minimize the environment effect, and ultimately it will safeguard catastrophic events like Bhopal. And recently, Yashasvi Rasayan and other industries, catastrophic disasters, which we came to, heard every day. आज नहीं कल नहीं हम लोग सुनते रहते हैं कि आज यहाँ पे आग लगी यहाँ पे बॉयलर फटा so the process safety is the thing which can safeguard your industry, your plant from all these unfortunate events and can safeguard lives. The unfortunate part in India is that ki life is very cheap, and Yeah, most of the industries जो ये सोचती है कि we are insured in case of any unfortunate event we will be paid and there will be no monetary loss, and if there is a human loss we can give money. But my matlab, I feel process safety is must for each and every, not only chemical industry, even pharmaceutical, fertilizer, any other industry where there is a involvement of chemical. Because ultimately आप जब एक catastrophic event से गुजरते हैं तो it's not only the monetary loss, it's also the reputation loss. So in my view, process safety needs to be implemented across all chemical industry across India. Thank right. So, sir, how critical are OSHA's 14 elements in designing a robust process safety management system? So, see, these are all frameworks: OSHA, EPA, DuPont, and then CCPS. These all are frameworks for, as I said earlier, process safety management is divided into two parts. One is management, one is the engineering. These are all the frameworks which is belongs to management. So, rather than I'm talking about OSHA's 40 elements, I would like to talk about CCPS 20 elements, which is the most robust. Before starting, see what is CCPS 20 elements, I would like to narrate what is CCPS.
which is very new for the Indian industry, even for the students, even for chemical engineering students. आई वुड लाइक व्हेन आपका जो ये पॉडकास्ट जाएगा जब देखेंगे तो उनको जो क्यूरियोसिटी जाएगी व्हाट इज सीसीपीएस. सीसीपीएस इज सेंटर फॉर केमिकल प्रोसेस सेफ्टी. So this is one wing of AICHE. You must have heard AICHE is American Engineering for Chemical Engineer and American Institute for Chemical Engineers. That is AICHE. The one of the wing is CCPS, and the CCPS started in 1992 after the Bhopal tragedy. So the uh, the the sad part is the Bhopal tragedy, which happened in 1984 in India. The learning which should take हम लोगों को लेना चाहिए था एज एन इंडियन, इंडिया में हुआ है, इसकी लर्निंग यूएस ने लिया. एंड दे Right. स्टार्ट थिंकिंग बिकॉज दैट टाइम इट इज ए यूएस कंपनी. सो Right. Right. उन्होंने उन्होंने सोचा कि अगर ये हुआ है बिकॉज इट इज अ वेरी बिग रिप्यूटेशन लॉस फॉर ए यूएस एमएनसी. तो इन 1987 दे स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ ये दोबारा नहीं होना चाहिए एंड हमको ऐसा एक रोबस्ट सिस्टम चाहिए which can safeguard such kind of incident in future. And in 1992 they started that CCPS, Center for Chemical Process Safety. And now the Center of Chemical Process Safety is the pioneer of process safety across the world. So as I started, the CCPS is 20 elements, framework. Now, not only 20 elements, in 20 elements, it's also a risk based approach, which is very, very advanced. Whereas other are not that much risk based approach, CCPS is risk based approach, and their 20 elements is divided into four pillars. The four pillars are: first pillar is commit to process safety. You know, uh, when you want to implement any safety management system anywhere in the world, the first thing is commitment from the leadership. If it's always a top driven approach, safety always a top driven approach, either is a process safety or workplace safety, it should be a top driven approach until unless there is a uh, top management is approving कि हमको करना है. They are not committed, it will never happen. एक तरफ आप बोलोगे कि इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप बोलोगे प्लांट चालू कर दो, होने दो लीक, तो दोनों चीजें आप नहीं कर सकते. So the commit to process safety is very important, which is a leadership element. There are many few elements out of five elements in that pillar. And then next is understanding hazard. When there is a commitment from the leadership, the second pillar is understand the hazard in your plant. And under that understanding hazard pillar, there are 3 to 4 elements which will आपको समझाएगा कि आपके प्लांट में क्या क्या hazard है. Once you understand the hazard in your plant, the third pillar is safeguarding those hazards. you know. And the last is, even though आप सब कुछ करते हैं फिर भी इंसिडेंट होता है, बिकॉज कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती. हम रिस्क को ALARP बोलते हैं, अलार्म लेवल, एज लो एज रीजनेबली पॉसिबल तक ही ले जा सकते हैं. हम उसको जीरो कभी नहीं कर सकते. इवन आप अभी पंखे के नीचे अगर बैठे, मैं तो पंखे के नीचे बैठा हूँ, हो सकता है पंखा गिर जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पंखा बंद कर दूं. तो एवरी एक्टिविटी, हम घर से बाहर जाते हैं, चलते हैं रास्ते पे, सीढ़ी उतरते हैं, हर चीज में रिस्क है. तो हम रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं सावधानी बरत सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. तो लास्ट जो पिलर है दैट इज कॉल्ड सॉरी लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट. इवन दो सब कुछ हमने करके देख लिया, कमिटमेंट देख लिया, रिस्क देख लिया, उस रिस्क को मिटिगेट कर लिया, बट स्टिल अगर इंसिडेंट होता है तो हमें उससे सीखना चाहिए. दैट इज कॉल्ड लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट पिलर. So these four pillars consist of 20 elements, and there is a systematic approach of implementing all those pillars. And it took time, depends on the industry to industry and the scale to scale. And usually it takes from 1 year to 3 years. And when it is implemented, your plant is, if not 100%, is far more safer than the present condition. Right. Yeah. Understood. So, sir, you very rightly mentioned that
whatever we do, there is some risk factor that is involved. Hmm. So in my last podcast, I had a guest and he was sharing about zero harm. Ah, So many companies have this policy of zero harm. yes. So yeah, so can you give me any what is zero harm and what is this? So again, zero harm always. No one wants कि हमारे प्लांट में 2 इंसिडेंट हो जाए, ठीक है ना? So every this is a target. Zero harm is a policy. Okay, but to achieve that zero harm, there is some method you need to implement. Right. We also have a zero incident policy, zero harm policy, but we always should have a practical approach to reduce risk. So always एक calculation होता है which is called TRIR. TRIR is a uh, the formula of TRIR is number of incidents multiplied by 2 lakh divided by number of man hours. So based on that आपके जो इस साल के आपका स्कोर TRIR कितना होता है वो निकलता है एंड हर एक कंपनी TRIR मेंटेन करती है सिमिलरली द सैड पार्ट इज जो कंपनी TRIR मेंटेन करती है व्हिच इज मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू वर्क प्लेस सेफ्टी का TRIR मेंटेन करती है मतलब वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई इंसिडेंट हो रहा है किसी की उंगली कट गई कोई कोई हाइट से गिर गया किसी के पैर टूट गए कोई स्लिप ट्रिप हुआ एंड देन उसकी वजह से वो 48 घंटे तक काम पे नहीं आया दैट इज कॉल्ड लॉस्ट टाइम इंसिडेंट LTI बोलते हैं और हमारे फैक्ट्रीज एक्ट में भी है कि इन दैट केस यू नीड टू रिपोर्ट एंड नीड टू फिल अ फॉर्म एंड उसके ऊपर से TRIR कैलकुलेट होता है बट in various MNCs we calculate process safety TRIR also which gives us the LOPC's incident अब आगे जाएंगे तो आपको LOPC भी बताऊंगा वो LOPC is loss of primary containment बेसिकली क्या है एज ए प्रोसेस सेफ्टी गाय प्रोसेस सेफ्टी गाय स्टिल वांट्स टू लर्न मेनी थिंग तो LOPC हमारा प्राइमरी रोल ये होता है कि हम LOPC को प्रिवेंट करें LOPC इज लॉस ऑफ प्राइमरी कंटेनमेंट एंड द बिफोर अंडरस्टैंडिंग LOPC you need to understand what is primary containment Right. for primary containment is what आपकी जो भी केमिकल है वो जिस चीज में रह रही है या जिस चीज में बह रही है मतलब वेयर इट इज स्टोर्ड Yeah. एंड वेयर इट इज फ्लोइंग जिस चीज में रह रही है जिस चीज में बह रही है वो उसके लिए प्राइमरी कंटेनमेंट इफ a sulfuric acid is flowing through a pipe the Mhm. pipe is primary containment for sulfuric acid if a nitric acid is storage in a tank the tank is primary containment for the nitric acid so loss of primary containment means any leakage in the tank, any leakage in the pipe, leakage from the flange. Mhm. So if that happens, क्या होगा? अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा. Yes. वो अंदर का मटेरियल बाहर ना आए, वो काम हमारा है. क्योंकि जैसे ही जो चीज अंदर है वो बाहर आ जाती है, वो खतरा बन जाती है. Right. Right. क्योंकि इन दिस केस सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड एसिड बाहर Yeah. आए किसी पे गिरा तो जल सकता है जमीन पे गिरा तो इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकता है बट अगर ऐसी चीज है लाइक हाइड्रोजन गैस if comes out it can catch fire instantly and there Yes. can be a catastrophic release भोपाल में जो ट्रेजेडी हुई जो Mhm. पानी आपका मिक्स हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ एंड देन प्रेशराइज हुआ एंड देन जो मेथाइल आइसोसाइनेट MIC which goes to atmosphere and वो जो बाहर आके लोगों को मारा दैट इज ऑल्सो LOPC तो हमारा काम है LOPC रोकना तो LOPC रोकने के लिए LOPC होने की जानकारी और उसका रेट को पता करना हमारी हमारी काम है तो हमारा हम भी चाहते हैं कि जीरो LOPC हो Right. बट वो होना पॉसिबल नहीं है जीरो हार्म की बात करें वो होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सोने का प्लांट नहीं बना सकते Yeah. Yeah. तो हमें जिसको बोलते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच अगेन CCPS में रिस्क बेस्ड अप्रोच की
कौन सी चीज ज्यादा रिस्की है। अगर पानी का पंप सील लीकेज हो रहा है बार बार, एंड वेयर एज नाइट्रिक का पंप का सील लीकेज हो रहा है बार बार, तो हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, किस पे अपना मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज इन Right. राइट नाउ वी आर इन ए कट थ्रोट competition across the chemical industry where you have to be sustainable to make profit। Yes. तो आप अब अगर हर जगह हम तो चाहते हैं पैसे लगाएं, लेकिन हर जगह पैसे लगाने के लिए पैसे होने चाहिए, पैसे Right. कमाने चाहिए। तो वो अप्रोच से हम ये कर सकते हैं कि इसको मिनिमाइज करें और लोगों को हार्म और पर्यावरण को हार्म होने से बचा सके। तो दैट इज Right, द sir. जीरो हार्म, ऑब्वियसली वी वांट अ जीरो हार्म। Yes. Sir, I was thinking that now I can characterize the accidents which are primary, like directly on human. कि किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट करेक्ट गया. करेक्ट। And these are secondary कि भाई पहले सल्फ्यूरिक एसिड गिरा, हाँ लीक हुआ, हाँ and then वो किसी पे गिरा. एग्जैक्टली। सो या So सो yeah, these are तो अगर ये जो डिफरेंशिएट आप अभी कर पा रहे हैं, जो आप पहले कोई हाइट वर्क करते हुए गिर गया, या कोई जो है yes, कोई पाइप पे काम करते हुए उसका हाथ खिसक गया और हाथ कट गया, किसी ने right. पंप के अंदर हाथ डाल दिया तो उंगली कट गई। दिस इज ऑल Hmm. कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रिलेटेड हैजार्ड और Okay, वर्क प्लेस रिलेटेड हैजार्ड, व्हिच इज नॉर्मल सेफ्टी, जो कि इट इज वेरी वेल स्टेबलाइज्ड इन इंडिया करंट सिचुएशन बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय द लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट। Whereas the okay. process safety जो कि मैंने बोला एलओपीसीज को रोकना, Hmm. कुछ कुछ पार्ट्स में हो रहा है। ये नहीं है Okay, कि एकदम नहीं है, बट एक राइट डायरेक्शन में जो अप्रोच होना चाहिए, जो एक माइंड सेट होना चाहिए लोगों का, उसमें बहुत बड़ी कमी है आज के दिन में। द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट कि जो टॉप पे बैठे हैं, जो hmm. टॉप पे बैठे हुए हैं, दे आर ऑल 90s 90s के हैं, 90s 80s के हैं, यू नो और उस समय प्रोसेस सेफ्टी उस लेवल का नहीं था। तो जब वो Right. ऊपर बैठे वाले लोग डिसीजन लेते हैं, तो उनके लिए प्रोसेस सेफ्टी, जब वो नाम सुनते हैं ना तो उनको सेफ्टी लगता है, चलो सेफ्टी है, Hmm. तो सेफ्टी करते हैं। तो वो लोग समझते हैं कि ये सेफ्टी का एक पार्ट है, इट्स अनदर डिवीजन ऑफ सेफ्टी। तो व्हाट दे डू दैट, Right. सेफ्टी को लीड बना के उसके नीचे प्रोसेस सेफ्टी को रखते हैं, एंड वहां से जो है डाइल्यूशन चालू हो जाता है। whereas प्रोसेस सेफ्टी इज entirely different, vertical, which needs different treatment and different approach. And it's a highly technical one. It's a highly technical and highly, managerial skill, soft skill be very, very much required because it's a Okay. totally cultural change. हम राइट नाउ जिस कल्चर में हैं उसका 180 डिग्री चेंज चाहिए to actually implemented process safety and risk management in the shop floor. And अच्छा. the sad part is because ये इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को उतनी नहीं है अभी, आ रही है क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट लास्ट 4-5 इयर्स में हुए हैं, तो आ रही है लोगों में। बट स्टिल क्योंकि होता क्या है ना, प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड इंसिडेंट होते हैं वंस इन अ ब्लू मून, 15 साल में एक बार। वेयर एज वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड इंसिडेंट जो होते हैं वो हर महीने हो रहे हैं, कुछ कुछ हाथ छिल जाता है, पैर में मोच आ जाती है। तो मैनेजमेंट को जब वो आप व्यू प्रेजेंट करते हो तो द नंबर्स जो दिखता है वो वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड ज्यादा दिखता है, प्रोसेस सेफ्टी वायरस दिखता ही नहीं है। जो दिखता ही नहीं है तब मैनेजमेंट उस पर खर्च भी करना नहीं चाहती कि जो हो ही नहीं रहा है, मतलब प्लांट सेफ है। तो ये नहीं समझते हैं कि जब एक बार होगा तो वो पूरे को वैनिश कर देगा, पूरी पूरी Exactly. इंडस्ट्री That वैनिश is, कर। इट इज लाइक भोपाल इंसिडेंट, yeah, it's very एक बार big. It's a हुआ, very big scale. इससे बिग बिग कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं और वो आपकी पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर सकती है। तो क्योंकि लोगों में ये चीज का अवेयरनेस कम है, तो क्या करते हैं जब वो हायर करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हायर करते हैं, तो उसका रेंज भी कम रखते हैं सैलरी का, एंड देन वो जो है सही टैलेंट को नहीं ले पाते। तो जो Yes. कि बिगेस्ट गैप। Right. Sir, मुझे आपसे थोड़ा समझ basically I was thinking that for example in process safety there is for example sulfuric acid which is placed in a container and it's flowing through a pipe.
So one aspect of process safety is to check whether the pipe is damaged. The other part is behavioral part. So can you share more about behavior or the cultural part of this process safety? Yes, you have asked a very very valid and important question, and मैं उस point पे आना चाहता था. Thanks, आपने एक question पूछा. It's called process safety culture. One thing, जैसे कि आपने पूछा, कोई line है जिसमें over the years corrosion के कारण there is a thinning in the line, and then there is a fitting, and then is a pinhole leak, and then there is an incident occurred. So इस स्टेज तक आने से पहले बहुत सारी चीजें होती. So as a personal, as a employee of that, और as a आप उस इंडस्ट्री से जब रिलेट करते हैं, तो जब जाते हैं तो आपका काम क्या होता है कि आप उस चीज को देखो. सो कोई भी इंसिडेंट जब होता है, इंसिडेंट होने से पहले वो बहुत सारे सिम्टम्स दिखाते हैं. इट्स वेरी मच लाइक ए ह्यूमन बॉडी. आपकी तबीयत खराब होने से पहले आपको फील होने लगता है कि वीकनेस आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा द सेम वे. इट्स लाइक विद द पाइपलाइन, विद द टैंक. आप जब जाते हो तो आपको दिख जाता है कि अरे यार, इधर तो करोजन हो रहा है, या इधर पे इंसुलेशन मिसिंग है, या ये इस तरीके से रखा हुआ है कि इसके ऊपर पानी ड्रॉप 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 गिर रहा है. सो अ गुड सेफ्टी कल्चर क्या करता है, एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, which is in my current industry, which is very 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 good. you know we इन सब चीजों में जो है, the technology, Okay. the software is very very helpful. So for example, right now we are using a software called Enablon. Okay, and that is a very good software. और उसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय आप जब जा रहे हो, देख रहे हो कि which is very unsafe, and there is a chance of leakage in future, which we put as a process safety learning event through Enablon, and then track through Enablon, and then we close through Enablon. So that way we reduce that risk, and उसको होने से पहले ही रोक देते. तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेफ्टी कल्चर जो कि आप बात कर रहे थे. एंड देन देयर इज अ टेक्निकल अगेन, द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एंड देन रिलायबिलिटी. तो ऑल दिस टेक्निकल एस्पेक्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि वो उस स्टेज तक Right. जाए ही ना कि आपको रिपोर्ट करना So, पड़े. sir, could you share some examples where technology interventions have significantly improved the safety of? ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने बताया कि there are many softwares available in the market, and you can make tailor made your software according to your need. So as I say, process safety is divided into two parts. One is the management. In the management system, you required you require data, and for data you required a software. तो सॉफ्टवेयर में जब आप डेटा रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड कैसा है, मैच्योरिटी लेवल कैसा है, आज हम कहाँ पे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस सेफ्टी, एंड द गैप असेसमेंट, एंड देन आप आगे के 3 साल में कहाँ जाना चाहते हैं. तो उस चीज के लिए अपने को जो है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने चाहिए. सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स है. फॉर एग्जांपल, द वन एलिमेंट कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ चेंज, which is very important. In that management of change element, whatever we do, we change in the plant, that should be going through a process, that is the approval process, and after approving, only you are authorized to change that in the plant. So in this can be do in a two way. One is a hard copy way, one is a software way. But and the latest technology, we should go for the software way, because it gives you the tracking, proper tracking in all respects. Similarly, incident investigation. If anything, any LOPCs happened, any mishap happens, that is investigated, and that investigation and the action item generated from the investigation should be tracked. Otherwise, there is no way you can improve on your past mistake or past incident. So that is called learning from incident. So that way, the software is latest technology is very important. Nowadays there is a AI based technology as well, where your camera can detect
दैट आपने पीपीईस पहना है कि नहीं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहना है कि नहीं। तो जब वो कैमरास जो आप Mhm. जब प्लांट में जाएंगे और आपने आपने चश्मा नहीं पहना, तो वो तुरंत डिटेक्ट कर देगा एंड दे कैन इन्फॉर्म यू नो कि भाई इस सेक्शन में ये इसने नहीं पहना है। एंड देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर वेयर you don't need to go to the plant. You can sit in the office and you can visualize the plant from there only. So 3D mapping के साथ. So there are AI tools uh, available, but it's not as popular right now Yeah. because everything is money. Okay. Makes sense. So, sir, like you mentioned, there are different softwares that gather that data, which helps in future decision making or understanding the trends Mhm. which are going on. So, to capture the data, I think there will be some sensors which will be placed in the plant to capture those. Okay. Correct. Yes, yes. So as I said, Mhm. na, Yeah, yeah, कि, as in camera, right. the camera will be put in the strategic location, and there is logic systems also there. Then in equipment controlling maybe abhi there is a very modified DCS आ गया है, distributed control system, which is very advanced with the very Mhm. safeguard process safety interlocks वहाँ पे काफी सारे हैं. So again वो चीजें जो है it's very important for Understood. improving for robusting Sir, your I plant. wanted to take some of your understanding and view on industries are constantly striving to become more automated. They want more robotics to take over. So, what are your views on Still I haven't experienced that robotic kind of plant, but that will happen in coming future. As I can see in the China, they are going for the robotics with respect to human. So that will bound to happen, and we should be ready for that change. And in a way that is more safer that? because Yes. human lives जो है direct involved नहीं हो रही है in a risk involved processes. Where इन केमिकल इंडस्ट्री से ज्यादा अगर आप स्टील इंडस्ट्रीज में जाओ जहाँ पे आपको फायर के सामने एंड द टेम्परेचर इज 1000 डिग्री 1200 15 डिग्री वहाँ पे काम करना पड़ता है. Right. रोबोटिक्स विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी सेफ. हाँ, nonetheless there should not be any job losses. So I don't think job losses, that there will be a change in the job rather than वहाँ पे आप रोबोटिक्स में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी. तो इट्स अ वे ऑफ डूइंग Right. अ Right. थिंग. इट्स लाइक Right. एनर्जी चेंज ऑफ एनर्जी फेस चेंज. इट्स लाइक इन 1992 when जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया था Uh, तो लोगों ने बोला था बहुत सारे लोगों की जो है नौकरियां चली जाएंगी. बट right. ये ऐसा होता नहीं है. तो इट्स इट्स अ चेंज एंड So, वी शुड बी sir, रेडी फॉर we दैट. were talking about that leadership, the top management is very important. So, what role does leadership play in embedding a strong safety culture across all levels of an organization? As I said, process safety or any safety is a top driven approach. Leadership involvement is must. It's mandatory. Otherwise, there will not be any change. And that involvement should be visible. It should not be only in the बातों में नहीं होना चाहिए, आपके कामों में भी होना चाहिए. हमारे एक साहब थे जो कि बोला करते थे कि ही इज अ वेरी वाइस प्रेसिडेंट लेवल के थे वो, और हम लोग काफी जूनियर थे उस समय. तो वो बोलते थे कि जब आप प्लांट राउंड पे जाओ, प्लांट केमिकल प्लांट के राउंड पे जाओ, तो यू शुड हैव अ विजन कि हम जा रहे हैं तो कि हम देखते जाएं. हमारी सेंसेस जो है चालू रहनी चाहिए. सेंसेस मतलब आईज, नोज, ईयर्स, टच, ये हमारी एक्टिव होनी चाहिए. यूजुअली लोग प्लांट राउंड में जाते हैं, एक चक्कर लगा आ जाते हैं. बोलते हैं अगर आप न गए और आपने कुछ अनसेफ नहीं देखा तो आपके जाने का कोई मतलब नहीं बनता. एंड द सेम वे जब लीडरशिप जब जाती है फील्ड में एंड वो जब कोई चीज पॉइंट आउट करती है तो उसका इफेक्ट जो है बहुत बड़ा होता है और वो लास्ट Right. लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है नीचे के लेवल पे.
So obviously, and there are many ways to improve process safety culture and leaders' commitment, starting from monthly reviews and daily reviews, starting any meeting with a process safety learning, ये lesson learned जिसको बोलते हैं, and then the compliance of your action item generated from various hazard studies. तो ये सब चीजें बताती हैं कि आपकी जो है इंडस्ट्री कितनी मेच्योर है, आपकी लीडरशिप कितनी एक्टिव Right, है, right. और वो So, कितना sir, इन्वेस्ट करना as we चाहती are moving towards है. the last part of our podcast, I want to understand from you, like for young professionals which are entering the industries today, what kind of mindset or skill should they develop to contribute to process safety excellence? So always said it's basically it requires the chemical engineering or mechanical engineering basically goes into process safety field. Right now जो मैंने सुना है कि अभी जो केमिकल जो इंजीनियरिंग की स्टडी कोर्स में प्रोसेस सेफ्टी इज आल्सो है Right. करिकुलम व्हिच इज नॉट जब मैं पढ़ रहा था. So it's a very I'll always say that newcomers, new engineers ki they should take process safety, process engineering as a prime career, because Mhm. right now it's very developing stage. Process safety is a very developing stage, and the resources is very few with respect to the demand. And in coming years, which I can see down the line 5 years from now, process safety is going to be a mandatory by law in India also, as just as we know, growing incidents हो रहे हैं. So when that will happen, then in that time there will be very few resources against the demand. तो अगर आप अभी से तैयार होंगे तो you have the best opportunity, better opportunity with respect to money, yeah, a position and all that. And the second thing, which is most important for me also, in this stream, your act save life. आपके आप जो करते हैं वो जान बचाती है और बहुतों की जान बचाती है. तो वो आपको एक जीने का सेंस देती है, पर्पस देती है, मोटिवेट करती है. And I think that is the biggest, motivation for me to do Thank you. process safety Thank by you heart. so much, sir, for giving Thank you, Amber. us Thank your you, time Amber, today. for having me. And this is my first, but I think it's a very excellent experience for me. So having this Right, conversation with you. So thank you, Amber. Thank right, you sir. very much. Thank you, sir. Thank So, today's discussion reminds us that modern safety is not just about compliance, it's about culture, innovation, and leadership. To all our listeners, stay tuned for more such conversations where we bring experts who are shaping a safer and smarter industrial future. Until next time, stay safe and keep learning. Take care and bye bye.